Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to see the poem number 3, The Inchcape Rock by Robert Southey. This is quite a popular poem. I made some visuals to make you understand the poem easily. Inchcape Rock is a place situated near coastal area of Angus, Scotland. इंचकेप रॉक को लिखने की प्रेरणा रॉबर्ट सॉदी को एक पायरेट लीजेंड से मिली। इसे एक समंदर के लुटेरे की कहानी भी कहा जा सकता है। इंचकेप रॉक एक चट्टान का नाम है। जो ये चट्टान आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस चट्टान का नाम ही इंचकेप रॉक है। यह चट्टान एक मौत का फरमान है। जब भी समंदर की लहरें अपनी उफान पर रहती थी, किसी भी जहाजी यानी कि सेलर को इसे दूर से देख पाना नामुमकिन था। जाहिर है वह इस चट्टान के ऊपर टकराते थे, लेकिन एक एबट मतलब महापुरुष ने एक घंटी यहाँ पे लगाई और एक तरंगने वाली पीपे से उसे बांध दिया। जब भी लहरें उस पीपे से टकराती थी, वह घंटी बजना शुरू हो जाती थी। इससे जहाजियों को इस चट्टान का अंदाज़ा होता था और वो थोड़ा दूर से ही अपनी राह मोड़ लेते थे और टकराने से बच जाते थे। इसी कहानी को रॉबर्ट सदी ने एक सुंदर कविता में ढाला है। इसी बेल को उस महापुरुष ने उस इंचकेप रॉक के ऊपर बांधा था एंड सदी वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस पायरेट लेजेंड। This poem is in a ballad form. The ballad is a long narrative poem and this poem consists of 17 stanzas. Let us deal with the first stanza of the poem. Let's move on to the stanza. No steer in the air, no steer in the sea. The ship was still as she could be. Her sails from the heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. Here, steer means motionless. Sails means the voyage and keel means lower part of the ship. The first stanza describes here the calm state of the ocean. There is no wind, ocean is still. The ship is docked near the coast and the ship is not moving at all. समंदर में कोई भी हलचल नहीं है। जहाज किनारे पे खड़ा है, उसकी यात्रा करने की कोई भी संभावना नहीं है। So this is what the first stanza describes, the calm state of the ocean. Let's move on to the second stanza. This is the lighthouse that you can see. The second stanza describes about the Inchcape rock. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape bell. There is no energy and no sound at all in the waves. They are gently moving in the ocean. They are flowing over the rock. You can see they are flowing over the rock. They are so gentle and passive, they can't even move the Inchcape bell. तो समंदर की लहरें काफ़ी शांत हैं और वो इंचकेप चट्टान के ऊपर से बह रही है। वे इतनी सौम्य हैं कि उनमें सामर्थ्य नहीं है कि वह घंटी बजा पाए। इन दोनों स्टैंजास में समंदर की और इंचकेप रॉक की शांतता के बारे में पोएट ने अपना मत प्रदर्शित किया है। Let's move on to third stanza. In this stanza, we come to know about the history of Inchcape Rock Bell. The worthy abbot of Abertoch had placed that bell on the Inchcape Rock. On a buoy in a storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. This is the abbot of Abertoch. The stanza says, the great abbot of Abertoch had placed the bell. The bell is installed on this instrument. This instrument is called buoy, and the bell is installed on this buoy.
Whenever the waves smashed on this boy, the bell would ring and warn the sailors. एक महान अबोट, एक महापुरुष है जिन्होंने इस घंटी की स्थापना इस पीपे पर की और इस पीपे पर उन्होंने घंटी बांध दी है। जैसे ही समंदर की लहरें इसके ऊपर टकराती है, उन लहरों के टकराने की वजह से इसके ऊपर बंधी हुई घंटी बज उठती है और ये सतर्क करती है आने जाने वाले सेलर्स को, आने जाने वाले जहाजियों को। So in this stanza we come to know about the history of Abbot of Aberthock. Let's move on to fourth stanza. In this stanza we come to know about the important fact. And what is that important fact? Let's read the stanza. When the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the Abbot of Aberthock. Mariners are the sailors. Perilous means dangerous, perilous means disastrous rock. What is the important fact over here? Whenever the tides were high, the rock would hide under the water. It would not be visible from the long distance, but the bell used to give them warning of this terrible rock, so they would thank the great abbot. जब भी वो लहरें बढ़ती थी, मानो इंच के पानी के अंदर छिप जाता था। दूर से इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था, पर यह घंटी बिना रुके संकेत देती थी और जहाजी को बचाती थी। वे मन ही मन उस महान अबट को शुक्रिया अदा करते और आगे बढ़ते। Let's move on to the next stanza. In the fifth stanza, poet again talks about the beauty of the ocean. He says, the sun in the heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. In a very bright way, sun is shining in the sky. Sun is shining in the sky. Heaven means the sky, and it is shining pretty bright in the sky. Everybody is enjoying. Every creature of the ocean is enjoying. The seabirds are screaming and flying here and there that you can see in the picture. They are so excited and happy that they are making the joyful sound as if they are thanking the ocean for their bread and butter. सूरज की खिलखिलाती धूप आसमान से समंदर में विलीन हुई है। हर तरफ खुशहाली है। समुद्री पक्षियों में खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वह दंग होके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। लग रहा है जैसे कि वे सुंदर गीत गा रहे हैं। वे जैसे कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं समंदर का, क्योंकि समंदर में ही तो उनकी जान बसी है। Through these lines, we see what a master of word Southey was. Let's move on to the next stanza. Stanza number 6. This stanza is about the great pirate Ralph the Rover. Pirate यानी कि एक लुटेरा. The stanza reads as, the boy of the Inchcape bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the Rover walked his day and fixed his eyes on the darker speck. This pirate fixed his eye through binoculars on a boy. Boy, जो मैंने आपको कहा था, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर बेल बांधी है. As he was staring through binoculars, the boy looked like a dark tiny spot in the green ocean. He fixed his eye on that dark tiny spot. इस लुटेरे की आंखें अब उस पीपे की घंटी पे जम गई हैं. इस विशाल समंदर में वो पीपा एक बिंदु की तरह दर्शित हो रहा है. लग रहा है उस लुटेरे के इरादे गलत हैं. जानते हैं उसके इरादे क्या है. In the next stanza, as you can see in this picture, Ralph the pirate was happy and excited by the sight of the bell. The stanza reads as, he felt the cheering power of the spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. Ralph the pirate was happy and excited. He's singing, he's whistling around because he's pretty happy, he's pretty excited, but his happiness and excitement is not for the good cause. You can see his heart was full of bad thoughts. एक तरफ हमें लगता है राल्फ काफ़ी खुश है उस घंटे को देख के. वे सीटी बजा रहे हैं, वो गा रहे हैं, पर शायद इस खुशी के पीछे उनकी बुरी मंशा है.
सब कुछ तो है उनके पास, फिर भी वो उदास। क्या है उनकी मंशा? आइए जानते हैं अगले स्टैंजा में। The stanza reads as, his eyes was on the Inchcape float. Quoth he, my men, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I'll plague the abbot of Aberthorpe. Plague means to destroy. Of course, his eyes were on what was floating there. He ordered his men to take out the small boat and sail to the Inchcape rock, as he wanted to destroy the bell and the good name of Abbot. अब ये तो तय है कि वो चाहते हैं उस घंटी को पाना। वे अपने साथियों के साथ छोटी नाव में रुख करते हैं और उस महापुरुष की हंसी मिटाने का ही अब राल्फ का मकसद बन गया था। क्या वो तोड़ पाएगा इस घंटी को? जानते हैं अगले छंद में, अगले स्टैंजा में। The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape row they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. So in this stanza we come to know that the small boat was taken out, that you can see over here. The big ship is here and they row from that ship to here in a small boat. The boatmen were rowing the boat to Inchcape Rock Bell. As you see in the picture over here, Sir Ralph bent and cut the floating bell. और जैसे उन्होंने तय किया था अपनी छोटी नाव को समंदर में उतार के अपने साथियों के साथ वो इंचकेप चट्टान की तरफ बढ़ने लगे और एक झटके में उन्होंने उस पवित्र लहराती हुई घंटी को काट दिया। क्या मिला होगा उन्हें उस पवित्र घंटी को काट के? आइए जानते हैं इन द नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 10। Down sang the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberthorpe. So here, as he cut down the bell, it started sinking in the ocean, making deep sound. Deep sound. Gurgling means a deep kind of a sound that it's making. There were bubbles bursting around the bell if they were sad to lose their companion. The bubbles are bursting and as if it looks like they were crying for the companion, the bell. No would be lucky now. Those who would come here would get killed on this rock, Sir Ralph mocked. घंटी को काट के राल्फ चले गए। घंटी की डूबने की आवाज़ गूंजती रही समंदर में, मानो बुलबुलें फूट फूट कर रो रहे हों। अब कोई बच ना पाएगा जो भी इस चट्टान से टकराएगा, बड़ी ही क्रूरता से हंसते हुए राल्फ ने कहा। आइए जानते हैं अगले स्टैंजा में वो क्या करते हैं। Sir Ralph the rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with a plundered store, he steers his course for Scotland's shore. Now you can see in the picture Sir Ralph went far away. He goes far away in the ocean. He sailed in the ocean for many, many days. Scoured means sailed, going on a voyage. He became rich by collecting the looted money. Plundered means the looted money. He became rich by robbing the money from the ships. Now he felt satisfied. Now he is quite satisfied with the loot, with the money, with the treasure, and he ordered his men to get back to the shores of Scotland. सर राल्फ अब काफ़ी आगे निकल चुके थे। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने समंदर का कोना कोना छान के खजाना लूटा। उसमें से कई जहाज इंचकेप चट्टान के टकराने से धराशायी हुए थे। उन्होंने उसे भी लूटा था। अब इस सफ़र से वो थोड़ा उब गए थे। अब उन्हें स्कॉटलैंड की याद भी आ रही थी और वो निकल पड़े स्कॉटलैंड के किनारे की तरफ। क्या वो पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक? जानते हैं अगली पंक्तियों में। The 12th stanza. So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. As they were moving towards their destination, they all experienced the dark soul of the ocean. Haze means the fog. There was fog spread all over the sky. It was not able to see the sun.
They cannot see the sun on high. It was black all over because of the fog. The wind hath blown a gale all day. At evening it hath died away. It was not able to see in the sun. There was disastrous wind, gale, disastrous wind all over the day, but at night it was dead silence. अब तक तो राल्फ और उनके साथियों ने समंदर का प्यार ही देखा था, पर अब वे समंदर के भयानक क्रोध का शिकार होने वाले थे। हर तरफ कोहरा और काली धुंध थी। दिन भर आंधी और रात में मौत सी खामोशी थी। क्या वे बच पाएंगे इस मृत्यु जाल से? देखते हैं अगले स्टैंजा में। So you can see the thunderous storm. On the deck the rover takes his stand. So dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is a dawn of the rising moon. The men of the Ralph were scared to death now. They hadn't seen such a dreadful night in their life. Ralph came out. He assured his men that though there was darkness, we couldn't see the land. Don't worry. There will be light soon. Look, there is a rising of the moon. अब राल्फ के साथी अपनी मृत्यु को देख पा रहे थे। काली धुंध की वजह से वह कुछ देख नहीं पा रहे थे, पर राल्फ एक बहादुर लुटेरे थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा, घबराओ मत, जल्दी इस काली धुंध को चीर के चांद की रोशनी हमें रास्ता दिखाएगी। क्या वो बाहर निकल पाते हैं? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 14। Canst hear, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish we could hear the Inchcape bell. They were tired mentally and physically. You can see all these men are tired physically and mentally. No matter how much they tried, they were going deep and deep. One of the boatmen burst into the tears. All of them became blind and deaf with open eyes. They couldn't see and hear anything. The crying boatman started cursing himself. He started cursing himself and he was saying that there was only hope that we had, that was Inchcape Bell, but that hope has doomed now. वे लाख बचने की कोशिश करते रहे, पर समंदर उन्हें अपनी ओर खींचता रहा। एक जहाजी तो फूट फूट के रोने लगा। आंखें और कान होते हुए भी वो अंधे और बहरे हो गए थे। वो ना कुछ देख पा रहे थे, वो ना कुछ सुन पा रहे थे। उनकी आखिरी उम्मीद वो इंचकेप की घंटी थी, पर एक दूसरे को कोसने के सिवा वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब शायद मरना ही उनके नसीब में था। देखते हैं आगे क्या होता है। Now you can see the boat is coming towards the Inchcape rock. They hear no sound. The swell is strong. Swell means the tide. Though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. O Christ, it is the Inchcape rock. It was unable to hear any sound because the tides were so strong. They cannot hear a single sound because of the strong tides. Though the wind had stopped for now, but they were drifting along with the surges in the ocean. They were drifting along with the tides of the ocean. They were not in control of the ship. Only the tides, only the waves are controlling the ship. And suddenly they got a massive shock. They yelled loudly in the name of Christ. That was the Inchcape rock. लहरों का जोर इतना था, कोई आवाज़ सुन पाना नामुमकिन था। हालांकि हवा का जोर भी कम हो गया था, पर उस नाव की कमान अब लहरों के हाथों में थी। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजती है और वे समझ जाते हैं कि वे इंचकेप चट्टान ही है जो उनके मौत का फरमान ला रही है। क्या राल्फ बच पाते हैं? देखते हैं आगे अगले स्टांजा में। Stanza number 16. Sir Ralph the rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in on every side. The ship is sinking beneath the tide.
Sir Ralph started ripping off his hair. He started cursing himself. He was repenting on his own decision. The waves started crushing. It started rushing from every side into the boat and it sank in the ocean beneath. सर राल्फ खुद को कोसते हुए अपने बाल नोचने लगते हैं। धीरे धीरे समंदर उन सबको जहाज के साथ निगल लेता है। क्या वो शांति से मर पाते हैं? जानते हैं अगले स्टैंजा में। The last stanza, stanza number 17. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. He was counting his last breath, still he could hear the sound of the bell. It was dreadful, it was terrible, as if it was a Inchcape bell. But it wasn't an Inchcape bell. Devil itself, the monster of death itself, ringing that funeral bell. जब राल्फ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, फिर भी उनके कानों में उस चट्टान की घंटी की आवाज़ गूंज रही है। ऐसा लग रहा है मौत का गाना उनके लिए घंटी बजा रहा है। तो in this picture you can see that Ralph is thinking about that bell. So this is what the masterpiece work of Robert Southey. Finally, the poetic justice is done. Poetic justice means good must be rewarded and bad must be punished. अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, यही तो पोइटिक जस्टिस आदर्श न्याय है। अगर आप इसी तरीके के और एक पोएम पढ़ना चाहते हैं तो राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर बाय एस.टी. कोलरिज बिल्कुल पढ़िए। उस पोएम में भी आपको पोइटिक जस्टिस के बारे में जानने को मिलेगा। तो पोएम कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।